So these are the various gaseous laws: Boyle's law, Charles' law, Regnard's law, which is also called Gay-Lussac law, and then Graham's law of diffusion, Avogadro law, Dalton's law of partial pressure. In addition to these 6 laws, you have kinetic interpretation of temperature, kinetic interpretation of temperature. That is, kinetic energy of one molecule is equal to 3 by 2 kT. Kinetic energy is a function of temperature. So this thing we have already done. One more expression for this: the total kinetic energy of the gas per unit volume is 3 by 2 times its pressure. So these 6 laws and these 2 things, they are to be deduced from kinetic theory of gases, which is given by P is equal to 1 by 3 rho c square. And this relation P is equal to 1 by 3 rho c square we derived making use of all the assumptions. Okay, so therefore we have made use of all the assumptions, and then we come to this conclusion that average pressure resulted by the gas is 1 by 3 rho c square. So this becomes kinetic theory of gases, and all these laws, they are to be deduced from this. Even these 2 expressions, they are to be deduced from this. Okay, so this will be our starting point for deducing any of the gaseous laws, or these are these. So this we did yesterday. Okay, so let us take this. The total kinetic energy of the gas per unit volume is equal to 3 by 2 times its pressure. This is the language, and if you convert this language into mathematics, so this is the kinetic energy of the gas, and is the mass of the gas. Okay, and then per unit volume, this must be equal to 3 by 2p. This is the mathematical form of this statement, and this is to be deduced from this. Okay, how? We know P is equal to 1 by 3 rho c square. सर लास्ट क्लास में हमने क्या था ना, Rho is equal to density of the gas, which is mass upon volume, into c square. Now you have to adjust. You have to adjust this thing in this form. You have mc square, you want half mc square. Okay? तो अब यहाँ 3 को आप इधर ले जाओ, 3p, okay, on this side you have mc square by p, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, multiplied both sides by half. Okay, and if you look at this right side, 1 by 2 mc square is the total kinetic energy of the gas, and in the denominator you have the volume. So therefore kinetic energy per unit volume is equal to 3 by 2 its pressure. Done. This thing we did yesterday, and this we have done today. Now we have to deduce these laws from kinetic theory of gases. Yesterday we derived Boyle's law, if you remember. Boyle's law. What was the statement of Boyle's law? Boyle's law states that if temperature of a given mass of a gas is kept constant,
then volume of the gas is inversely proportional to pressure. Mathematically, volume inversely proportional to pressure if T is constant. Or you can say P into V is equal to constant. The product of pressure and volume of a gas at constant temperature is constant. This is Boyle's law. ये यहीं से आया है. V proportional to 1 by P. यहाँ constant लगाओ तो V will be equal to K by P. P को इधर ले जाओ. P into V is equal to K. Okay? ये यहाँ कहाँ से deduce होगा? Yes. P is equal to 1 by 3 C square. So we can write density as mass by volume. Then V into P, P into V, 1 by 3 mc square. Yesterday I told you C square proportional to T. Yes, sir. Root mean square velocity is a function of temperature. So that means PV proportional to T, and if temperature is kept constant, T is constant, then PV will be some constant into this T. Yes, sir. Okay? And this is constant, this temperature is also to be kept constant. That means this side is another constant. Constant multiplied by constant is equal to constant. Constant divided by constant is another constant. Okay, constant plus constant is constant. So, therefore, P into V is constant. This is what you say, Boyle's law. Clear? And if you plot a graph, if you show this graphically, then PV diagram will be, this diagram will be at one fixed temperature. Let us say it is at T1. Then you take the same gas, but take different temperature. Okay? That will be T2, greater than T1. Take the same gas at higher temperature and keep that higher temperature constant. And then see the variation of P and V. The nature of graph will be same. Okay? But for higher temperature, you will have this graph, not this. टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ती है. ठीक है, आप ये टेम्परेचर दोनों डिफरेंट है. ये हायर देन दिस यू हैव. ओके, and you have to keep T2 constant, then you have to plot a graph between P and V. Graph will be like this, and the product of P and V will be always constant at a fixed temperature. तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं P1 V1 is equal to P2 V2. Then yesterday I showed you 4 graphs, and which was the correct graph for Boyle's law. This is PV, and on this side either P or V. Graph between PV and P or V, any of the two. Okay? Can be like this, can be like this, can be like this, and can be like this. PV versus V or P. Boyle's law, PV has to be constant. Product of P and V has to be constant. Therefore, for a constant, the graph should be parallel to this axis. This is the correct graph for Boyle's law out of all these 4. Okay. Then next is Charles' law. What is the statement of Charles' law? Charles' law says that if pressure is kept constant,
then volume of a given mass of a gas is directly proportional to absolute temperature. In general, I told you, gas law means the relation between any of the two macroscopic parameters. Out of pressure, volume, temperature, keep one of these three constant, and then the relation between the other two will be a law. In first case, we kept temperature constant. The relation between P and V was Pv is equal to constant. It is a law, that is Boyle's law. Now we are keeping pressure constant. Other variables are V and T. Okay. The charter says if the pressure of a given mass of a gas is kept constant, volume is directly proportional to temperature. So how to derive this relation from kinetic theory? This is kinetic theory. P is equal to 1 by 3 rho c square. So P will be equal to 1 by 3 m by v c square. V to take on this side, m by p c square. This item is constant. Mass of gas. You have been given a given mass of the gas, and then you have to change the variables. So ये constant pressure has to be kept constant. So therefore 1 by 3 m by p, this item is constant, which means V proportional to C square. But you know C square proportional to T, which means V proportional to T. Which others now? Okay, graphically it will be straight line. Volume is directly proportional to absolute temperature. This happens only when pressure is kept constant. Okay? Now, if you plot a graph between V by T and T, what type of graph you will get? Yes. When you say V proportional to T, V proportional to T means V is equal to some constant into T, which means V by T is equal to constant. So V by T, this ratio has to be constant. And when one of the two variable is constant, graph is parallel to either this axis or this axis. Because V by T is constant, so graph has to be parallel to temperature axis. Clear? Yes, sir. Third is Reynolds law or Gay-Lussac law. This states that if volume of a given mass of a gas is kept constant, then its pressure is directly proportional to temperature. This is Reynolds law or Gay-Lussac law or pressure law. Yes, sir. Relation between P and T, keeping volume constant. Okay, so this is also to be derived, reduced out of kinetic theory. P is equal to 1 by 3 rho c square. P will be 1 by 3 rho is equal to m by v. Okay, then P is equal to 1 by 3 m by v. Volume is to be kept constant. So that means in this case 1 by 3 m by v will be constant. So here it will give you P proportional to C square, and C square is proportional to T, therefore P proportional to T. And graphically, the graph between P and T will be straight line. And graph between T and P by T will be parallel to temperature axis.
So, three laws we have deduced from kinetic theory of gases. Clear? Then Graham's law of diffusion. What is Graham's law of diffusion? What is diffusion? Diffusion is intermixing Yes. of two or more gases which do not react chemically. जैसे एक सेक्शन के बच्चे दूसरे सेक्शन में कई बार मिक्स हो जाते हैं, टीचर की शॉर्टेज होने से दो सेक्शन कंबाइन करके टीचर एक पढ़ाता है, Two different gases. और वो सेक्शन सेम क्लास के सेक्शन है और वो मिक्स हो गए, जहाँ सीट खाली मिली दूसरे सेक्शन के बच्चे आगे बीच में बैठ गए, ये इंटरमिक्सिंग है और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ तो ये डिफ्यूजन है, और अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो केमिकल रिएक्शन है। तो हमने क्या सपोज किया डिफ्यूजन में, देयर इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर गैसेस व्हिच डू नॉट रिएक्ट केमिकली। केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। Sir, different gases, no? है? Different gases. Yes. Different gases they will get mixed without interacting with each other, without having any chemical Reaction. reaction. That is diffusion. Then the rate of diffusion. First is diffusion. Diffusion is intermixing without chemical reaction. Then rate of diffusion. Rate of diffusion means how quickly one gas will get mixed with other. ठीक, दो सेक्शन की बात करते हैं तो जो जो बच्चे पतले होते हैं, स्मार्ट होते हैं, वो जल्दी सीट दे के फास्ट मिक्स हो जाते हैं। अब मोटा बच्चा हो तो उसको चलना ही मुश्किल हो, सीट खाली भी बड़ा टाइम लगा देगा। तो यहाँ जो गैसेस लाइटर होंगी, हल्की गैसेस होंगी जिनकी डेंसिटी कम होगी, वो जल्दी मिक्स करेंगे। रेट ऑफ डिफ्यूजन मीन्स ये रेट ऑफ डिफ्यूजन वॉल्यूम मिक्स्ड per second. How many liters of one gas gets mixed per second with other without chemical reaction? Okay, volume mixed per second, that is rate of diffusion. And the rate of diffusion will depend upon the root mean square velocity. R will be proportional to C. जिसकी स्पीड ज्यादा है वो जल्दी मिक्स होगा, तो तेज भाग सकता है, ठीक है ना, तो जल्दी मिक्स होगा। कॉमन ऑब्जर्वेशन, इंटरमिक्सिंग हो रही है दो या दो से ज्यादा गैसेस की, केमिकल रिएक्शन हो नहीं रहा, तो हम ये देख रहे हैं कि कौन सी गैस जल्दी मिक्स हो सकती है, जो लाइटर होगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी और जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। ओके, तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है? अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दोनों गैसेस को सिमिलर कंडीशन देनी है, टेम्परेचर सेम रखना दोनों का। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। दिस इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। Rate of diffusion inversely proportional to square root of density, which means R1 by R2 will be rho 2 by rho 1 under root. दो गैसेस है ना, दोनों की अलग अलग डेंसिटी होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन दोनों का अलग होगा, कोई लाइटर कोई हैवियर, किसी की स्पीड कम किसी की ज़्यादा, तो उनका रेट्स अलग अलग होगा। तो अंडर सिमिलर कंडीशंस ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन स्टेट्स द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, व्हिच मींस R1 by R2 will be rho 2 by rho 1. And if you take this point into consideration, then you will say R1 over R2 will be C1 by C2. Rate of diffusion directly proportional to speed. रूट मीन स्क्वायर स्पीड ले लो,
हो गया? Yes, sir. ये तो लॉ है, ग्राम्स लॉ डिफ्यूजन, बट वी हैव टू रिड्यूस इट फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, टू गैसेस P1 is equal to half to C square. P2 1 by 3 rho 2 square. two gases with different densities, rho 1 and rho 2, and having different root mean scale speed, C1 and C2. Okay? Then these two gases are to get mixed without any chemical reaction under similar condition. Under similar condition of temperature and pressure. जब मिक्स हो गए, सेटल हो गए सारे, फिर देयर इज नो प्रेशर डिफरेंस। Yes, sir. गैस क्यों भागती है एक जगह से दूसरी जगह? प्रेशर डिफरेंस होता है। और जब इक्विलिब्रियम आ गया, केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं, केमिकल एक्शन तो होना ही नहीं, ठीक है ना, प्रेशर सेम हो गया, जितना मिक्स होना था गैस में मिक्स हो गया। Constant pressure. So P1 will be equal to P2 in equilibrium, which means 1 by 3 rho 1 C1 square is equal to 1 by 3 rho 2 C2 square. 1 by 3 gets cancelled. Then rho 2 by rho 1. Rho 2 by rho 1 will be C1 square by C2 square. Okay? Or you can say C1 by C2 will be rho 2 by rho 1 under root. Take square root on both sides. Okay? Then make use of this. C1 by C2 is equal to R1 by R2. We have say C1 by C2 is also equal to R1 by R2. Equating these two, you will get R1 by R2 is equal to rho 2 by rho 1 under. Rate of diffusion inversely proportional to square root of density. If you take two gases, hydrogen, oxygen, let us suppose, okay, to let them mix with each other without any chemical reaction. So hydrogen being lighter gas, so will have higher rate of diffusion. It will mix quickly. ऐसी कम है ना, rate of diffusion ज़्यादा होगा, inversely proportional. Yes, sir. तो हाइड्रोजन फास्ट मिक्स हो जाएगी, जल्दी मिक्स हो जाएगी, लाइटर भी है, डेंसिटी कम है, and rate of diffusion according to Graham's law diffusion is inversely proportional to square root of density. Density of hydrogen gas is less as compared to the density of oxygen gas. ठीक है? So next we have Avogadro's Graham's law हो गया, Yes, sir. Avogadro's law. What is Avogadro's law? Under similar conditions of temperature and pressure, equal volumes of all the gases contain equal number of molecules. दो गैसेस ले लो, उनका वॉल्यूम सेम, उनका प्रेशर सेम, उनका टेम्परेचर सेम, तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होंगे. Under similar conditions of temperature and pressure, equal volumes of all the gases contain equal number of molecules. So let us take two gases, gas A and gas B, pressure exerted by gas A, 1 by 3 rho A CA square. On this side PB, pressure exerted by gas B, 1 by 3 rho B CB square. The PA is equal to 1 by 3 M1 N1 V1. So इसको 1 ले लो, it will be easier. Okay.
second gas, name as gas A or B or gas 1 and gas 2. So this is the pressure exerted by gas number 1. It is 1 by 3. Rho means density means mass upon volume. And if this gas has n number of molecules, m1 is the mass of one molecule. Okay, so the mass of the first gas will be mass of one molecule into the total number of molecules. Okay, similarly, you have P2. यहाँ ये आएगा. P2 will be 1 by 3 M2 N2 V2 C2 scale. To apply the condition. क्या condition थी? Under similar conditions of temperature and pressure, equal volumes will contain equal number of molecules. Equal volume. तो ये V1 V2 भी बराबर होंगे, P1 P2 भी बराबर होगा. Under similar conditions of temperature and pressure. तो pressure same है, तो फिर 1 by 3 M1 N1, volume भी same है. Yes sir. वॉल्यूम भी सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा. ठीक. M1 M2 सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट गैसेस. सर 1/3 कट जाएगा. 1/3 कैंसिल होगा. ओके. प्रेशर सेम, वॉल्यूम सेम, अब टेम्परेचर सेम, तब N1 विल बी N2. तो टेम्परेचर कम लिया था ना. You have M1 C1 square into N1 is equal to M2 C2 square N2. You can rewrite this as this. Okay. Then you also know the kinetic interpretation of temperature. No. You have to take same temperature for the two gases. Okay. Equal pressure लिया, equal volume लिया, अब equal temperature लेना है. तब आपको ये प्रूव करना है कि both the gases will have same number of molecules. तो ये दोनों equal है. That means 1/2 M1 C1 square is equal to 1/2 M2 C2 scale. This gets cancelled. To make use of this summation, M1 C1 scale is equal to M2 C2 scale. Okay, then we will be left behind N1 is equal to N2. Same number of molecules. Under similar conditions of temperature and pressure, equal volumes of all the gases contain equal number of molecules. ये है Avogadro's law. Got my point? Yes sir. Yes sir. तो हमने प्रेशर इक्वल ले लिया, वॉल्यूम इक्वल ले लिया, टेम्परेचर इक्वल ले लिया, उसके बाद प्रूव किया कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों गैसेस के सेम. ओके. तो अभी दो गैसेज लिए, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं. क्लियर? कितने सर नंबर? अगर 3 लेंगे तो N1 = N2 = N3 आ जाएगा. यस. चलो ये भी हो गया. नेक्स्ट and last. pressure. Dalton's law of partial pressure. क्या स्टेट करता है? The pressure exerted by a mixture of gases which do not react chemically. Pressure exerted by the mixture, okay, of gases which do not react chemically is equal to sum of their partial pressure. Means अगर आप एक कंटेनर लेते हैं, ये कोई वेसल आपने ले लिया, ओके.
इसमें गैस नंबर 1 डालो इस लेवल तक, प्रेशर P1 exerted by gas number 1, टेम्परेचर सेम रखना है अंडर सिमिलर कंडीशंस। आपने मिक्सचर ऑफ गैसेस लेना, पहले एक एक गैस का प्रेशर पता कर लो। एक वेसल है, इसमें ये टेम्परेचर है, यहाँ तक वॉल्यूम है, प्रेशर ये है। अब इस कंटेनर से इस गैस को हटाओ, इसमें दूसरी गैस डालो, सेम वॉल्यूम सेम टेम्परेचर, और जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेकंड गैस होगा लेट इट बी P2। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फर्स्ट गैस 1/3 ρ1 C1 स्केल। ओके, it can be written as 1/3 m1 n1 v C1 scale। You have a vessel and you have gas number 1 in this vessel, okay, and then you note down the pressure exerted by this gas. Then remove this gas from the vessel, fill this vessel by the second gas at the same temperature, same volume, pressure exerted will be different, okay। तो second gas जब इसमें fill किया तो pressure 1/3 M2 N2 वॉल्यूम सेम है, प्रेशर ये होगा। Then remove second gas and fill it by the third gas under similar condition, same vessel, same volume, same temperature, gas different है, pressure different है। So third gas pressure will be P3 1/3 M3 N3 V C3 whole scale and so on। You can mix large number of gases. The condition is the gases they do not have any chemical reaction। अब हमने एक एक को सेम वेसल में डाल के सेम टेम्परेचर पे एक एक का प्रेशर देखा। ये पार्शियल प्रेशर है, इनको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैसेस। ओके, अब क्या करो, इन सारी गैसेस को उसी वेसल में मिक्स कर दो। अब आपने यहाँ मिक्सचर लेना है, गैस नंबर 1 2 3 मिक्सचर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर, सेम टेम्परेचर, सेम वॉल्यूम, सेम वेसल, सिमिलर कंडीशन है। और जो मिक्स हमने किया गैसेस को, दे आर नॉट रिएक्टिंग विद ईच अदर, उनका पार्शियल प्रेशर हमने नोट किया। What does this Dalton's law partial pressure say? Pressure exerted by the mixture of the gases which do not react chemically is equal to sum of their partial pressure। हमने 3 गैसेस मिक्स की या 4 मिक्स की, ठीक है, एक एक का प्रेशर देखा और फिर मिक्सर बनाया, सेम वेसल, सेम टेम्परेचर, सेम वॉल्यूम। तो मिक्सर ले लिया, गैस रिएक्ट कर नहीं रही, पहले हमने एक एक का प्रेशर नोट किया था, ये पार्शियल प्रेशर थे, ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सर है। और ये लॉ ये कहता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ गैसेस व्हिच डू नॉट रिएक्ट केमिकली मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर। ओके, तो मान लीजिए हम पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं, पार्शियल प्रेशर P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश डैश डैश, इनकी वैल्यू डाल रहे हैं, इनकी वैल्यू डाल रहे हैं 1/3 M1 N1 V C1 scale plus 1/3 M2 N2 V C2 scale plus 1/3 M3 N3 V C3 scale and so on। ओके, क्या काम बना है 1/3 V, ओके, काम बना। देन M1 C1 स्केल, आपको ये भी पता है टेम्परेचर सबका सेम है, तो 1/2 MC स्केल इज इक्वल टू 3/2 KT है, टेम्परेचर भी सबका सेम है। इट विल मीन कि 1/2
m1 c1 square will be equal to 1 by 2 m2 c2 square will be equal to 1 by 2 m3 c3 square and so on. Temperature same है, and you know the kinetic interpretation of temperature. क्या हो kinetic energy related to temperature? Yes, sir. मिक्स किया तो सेम टेम्परेचर, एक एक गैस का भी सेम टेम्परेचर था, Yes, sir. सेम वेसल था, सेम टेम्परेचर, और अलग अलग गैसेस उसमें डाली गई और एक एक का अलग अलग प्रेशर नोट किया गया, पार्शियल प्रेशर। फिर उन सब का गैसेस का मिक्सचर बनाया उसी वेसल में, उसी टेम्परेचर पे, और फिर मिक्सचर का प्रेशर देखा गया। तो फिर डाल्टन लॉ ये कहता है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर। तो हम अभी सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं। ओके, अब ये क्योंकि टेम्परेचर सेम है मिक्सचर का और इंडिविजुअल गैसेस का, तो हम इसको यूज करेंगे। हाफ 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 कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन ये m1 c1 के इधर n1 प्लस m2 c2 के n2 प्लस m3 c3 के n3 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इसमें आप कॉमन ले लो 1 by 3 v m1 c1 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 c2 स्क्वायर इज इक्वल टू m3 c3 स्क्वायर। इसको हमने mc स्क्वायर ले लिया। बाकी क्या बच गया अंदर n1 प्लस n2 प्लस n3 डैश डैश डैश। What is this? This total number of molecule of the mixture. Number of molecule of gas number 1, number of molecule of gas number 2, number of molecules of gas number 3. तो जब मिक्सर हो गया तो sum of the molecules of the mixture हो गया ना, total number of molecules of the mixture. So it will be 1 by 3 v m into n c square. Okay, m into n means mass of the mixture. मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द मिक्सर है, तो ये मास ऑफ द मिक्सर हो जाएगा। इट विल बी 1 by 3 m by v square, तो इट विल बी 1 by 3 rho c square, and this is equal to the pressure exerted by the mixer. एक ही गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिक्सर में ऐड हुए हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द मिक्सर है। ठीक है, तो ये मास ऑफ द मिक्सर हो जाएगा, ये वॉल्यूम, तो मास पर वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ द मिक्सर, यानी 1 by 3 रो m by v रो हो गया डेंसिटी ऑफ द मिक्सर, और ये c स्क्वायर, ये 1 by 3 रो c स्क्वायर, दिस इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सर। वी स्टार्टेड विद सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, और हम यहाँ आ गए ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सर एंड डाल्टन लॉ reduced. Yes. Dalton's law of partial pressure states that under similar condition of temperature and pressure, the pressure exerted by a mixture of gases is equal to sum of the partial pressure. यानी हमने एक ही गैस का प्रेशर सेम कंटेनर में, सेम टेम्परेचर, सेम वॉल्यूम। ओके, अब इंडिविजुअल गैस की कोई वॉल्यूम नहीं, जिस कंटेनर में आपने उसको डाल दिया वो उसकी वॉल्यूम ले लेगा। तो फिर सभी का सेम कंटेनर में हमने एक एक गैस को फिल किया, उनका इंडिविजुअल प्रेशर मेजर किया, फिर सारे गैसेस को मिक्स करके उसी कंटेनर में डाला, उसी टेम्परेचर पे, वही वॉल्यूम, वही टेम्परेचर। ओके, तो मिक्सर का जो प्रेशर है वो ये आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर। हो गया। Yes, sir. 6 gaseous laws plus kinetic interpretation of temperature plus total kinetic energy per unit volume is equal to 3 by 2 times the pressure। कि हमने 8 बातें आज Thank you. kinetic theory of gases से डिड्यूस की है। एक लेक्चर और लगेगा तब भी kinetic theory gases खत्म होगी।